Good morning to all learners. Good morning to all learners. Good morning, sir. Very good morning, sir. Whether my voice clear or not? Voice clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So proceed to discuss about the voluntary association in a democratic society. So democracy, about the meaning of democracy, most of all you know. The democratic rights and fundamental freedoms. Because the society progressive, the progressive secular and liberal principles and ideals, democratic rights and fundamental freedoms, which laid the foundations of modern democracy and enshrined in various historic bills, declaration, etc. Democracy धीरे धीरे advance, modernize. Modern democracy is converted into the ancient democracy into modern democracy. So out of this democratic form of government, India is the best example in the world. The latest and modern democratic, the world largest democratics exist in our country. Because we are extracting different thoughts, ideas, beliefs from different constitution of the world, from different country. ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ we are incorporating in our constitutions like the parliamentary form of government we are extracting from Britain constitution. The presidential form of government we are extracting from United States of America. So like we are extracting German constitution from Switzerland constitution, Irish constitution. So that is why we are titling Indian constitution the largest constitution, best constitution in the world and that democratic form of government. So the most important landmarks in the evolution of democracy, English Bill of Rights. So democracy केमती develop hella, prathame we should focus on the ancient periods. 1689, the English Bill of Rights. Bill of Rights gote seti first formulation karagala. United States Bill of Rights as completed during 1791. That also incorporated in democratic form of government. Next, Declaration of Rights of Man and of the Citizens. Next, Constitution of India. So these are the important aspects included in a democratic system of government. So Bill of Rights as so what are the aspects included after Magna Carta? The Bill of Rights considered the most important document of constitutional law and a significant step towards constitutional monarchy. So Bill of Rights re kon thila? Freedom of speech in parliament, freedom to elect members of parliament, freedom from royal interference with law, freedom from taxation by royal prerogative, and freedom from cruel and unusual punishment, and freedom to petition the king and so on. So equally ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର freedom that is included in Bill of Rights and that what developed the democratic ideals and thoughts. So United States Bill completed during 1791. United Bills किभली develop करिथिला ओटा democratic form of government. How it is changed? Like freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly, freedom of religious worship, preventing unreasonable search and seizure, cruel and unusual punishment, and like provision of an independent judiciary. एगुड़िक सबू अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रे बिल ऑफ राइट्स रे इनकॉर्पोरेट करा जायथला इंक्लूड करा जायथला so that also give birth and develop the voluntary association in a democratic society. So after that we proceed to discuss and focus on the point of Indian constitution
or Constitution of India as it starts. The Constitution of India is the most refined and documents in the history of modern democracy. During 1950, after the departure of Britishers, we that formulate the Indian Constitution with the principle of liberal democracy. भारतीय गणतंत्र को कहा जाए लिबराल बा कोहल गणतांत्रिक राष्ट्र भाव में लिबराल डेमोक्रेसी. We achieved our sovereignty both internally and externally. Internally we are free. Externally no foreign aggression or foreign attack will be held to our country. So externally, internally we are free. No foreign dominions will attack to our country. So that is why we title as the sovereign states. India is a country of sovereignty. And in this context, we have that it establishes the main organs of governance. The main organs of government of Indian democracy कौन तीनोटी organs अच्छी मनीषर जो भली विभिन्न प्रकार organs अच्छी से भली आम प्रशासन शासन व्यवस्था तीनोटी organ important aspects, that is executive, second legislative, third होची judiciary. So three important organ of our democracy. So democracy, socialism, secularism and national integration is our main object of our Indian liberal democracy. So that it first express about the preamble. Pratima Malik, how? Pratima Malik, listen carefully. You are disturbed. Mute karo, Pratima Malik, mute karo. Yes, sir. Okay. So let us listen. Constitution of India, the preface. भारतर संविधानर मुखबंध प्रियाम्बुल को भल भाबे सबु लर्नर्स माने मुखस्थ करदब पुनः मनरे जेतेबेले जे कहबे एटा सबु आड एप्लीकेबल अछि मन रखिता. The counseling part I am stating you that Indian Constitution or preamble जोटा ताकू सबु बेले लाइफ लॉन्ग दरकार पड़ी थाए. जीवन बंचाइबा पई जे भली हमकु पानी पीवा पई पड़ी थाए ठीक से भली आम भारतर शासन प्रशासन कुशासन विषय जानिबा पई हेले हमर फंडामेंटल राइट्स कोन ड्यूटी कोन एडा जानिबा पई हेले भारत को भली गोटे डेमोक्रेसी नालिया ना ग्रीन कलर ना हळदी कलर को कलर कोन हमर मुह व्हाट इज आवर फेशियल अपीयरेंस आमे किमिति जानि पारुचंती हमर फेसटार मुखमंडलर दृश्यटा when we visualize through a mirror. Mirror oinare ame dekhile ame muhar avastha ame jani paru. So exactly preamble, what is preamble? Preamble exactly mirror of the Indian Constitution. Author Dr. B.R. Ambedkar संविधान भितर कौन लिखिचंती ए प्रियाम्बल ही जना पड़े. आम मुखमंडलर आकृति किभली आमे जानिबा किमिति भल अछि कि बांदर अछि आमे जानिबा किमिति जदि ओइनार आमे देखिबा. So preamble is just like a preface, exactly the mirror of the Indian Constitution. या mirror भली आमे जानि परिबा preface टाको आमे जानि देखिले आमे जानि परिबा भारतर संविधान भितर कोन सब लिखा अछि कोन नुआ नुआ अमेंडमेंट हेछि आर्टिकल कोन परिवर्तन हेछि. So exactly Indian Constitution preamble is the mirror of the Indian Constitution. So it is, otherwise you can say the preface. प्रत्येक बहिर मूलरे आरंभ रे preface गोटा थाए ताकू ओडिया रे कहा जाय मुखबंध. से मुखबंध रे ऑथर बा राइटर बही भितरे कोन लिखिचंती हमें तादुर जानि परिबा. So प्रत्येक learners should try to keep it in your mind. What is the exact meaning of a preamble? So that I am stating you what is the real meaning of preamble. We the people of India having solemnly resolved India into a
sovereign, socialist, secular, democratic, and republic form of government with dignity, fraternity, etc. So आमे ओडिया ता कहले कोन बुझिबा आमे सबु भारतीय पवित्र सहकारे घोषणा करूछु जे आमे होची भारतीय माने साधारणतंत्र गणतंत्र समाजवाद धर्म निरपेक्ष राष्ट्रर अधिवासी अटु आर यू क्लियर Yes, sir. okay Yes, so sir. this is our preamble एथुर जणे देला जे संविधान भितरे एई कांसेप्ट गडाका अछि so each should have keep it in your mind about the preamble of the Indian constitution ताधर हमर कोन रहउछि ना फंडामेंटल राइट्स तमे जे जानि छ फंडामेंटल राइट्स कोन हमर कोन मौलिक अधिकार अछि that is incorporated included in our preamble so right to equality right to freedom right against exploitation right to freedom of religion cultural and educational rights एगरा सब सिना मन रखिले हमर लाइफ रे कारण आमे जने गणतंत्र राष्ट्र अधिवासी तनो हमको सब बेले लाइफ रे दरकार पड़ी था एगरा right to constitutional remedies etc so right to freedom आमे किभली voluntary association in a democratic society I will turn to form one voluntary association by focusing towards Indian constitution we can form one voluntary association so right to freedom that means freedom of speech expression belief faith freedom to assembly peacefully without arms freedom to form association and unions एथरे हमर इंक्लूड करा गला जे how we can form the voluntary association so constitution as incorporated here freedom to move freely throughout the territory of India freedom to residence and settle in any part of the territory of India hela so this is the freedom essential tenets of voluntary association kon so voluntary association essential tenets achi so that freedom of association is a hallmark of a democratic society a significant attribute of such collective action was reciprocal compulsion determined by birth caste occupation and so on the rise of democracy and attendant economic transformation created conditions where individuals could voluntarily donate free time and labor to execute collective action related to social causes in a democratic society गोटे गणतांत्रिक समाज रे आमे हमर मूल्यवान स्वेच्छा रे मूल्यवान समय दे परिबा एवं परिश्रम लेबर श्रम श्राद्ध करि परिबा तनो आमे association voluntary association form करि परिबा so that in this context a right to freedom of association in this context we can express about the ideas of right to freedom of association freedom of association as a legal right of all individuals to combine or quit according to one's own free will for the promotion of a common cause of or purpose become a standard practice in liberal democracy of voluntarism आमे common practice एगडा को सब जोगडा कि आमे गोटे form association करि परिबा that our constitution also indicates and meaning of a voluntary association the two fundamental tenets how can clarify about the meaning of the voluntary association right to freedom of association political legal economic conditions for expression of both these tenets freedom of association and voluntarism have become available to mankind only with the rise of democracy so economic political and social situation legal situation also the indicators of voluntary to form the voluntary association in a democratic form of society so that there are some essential aspect also included to form the voluntary association so transformation of a traditional तादर include करा जाउची जे मन रखिता genesis growth of voluntary association कोन सब genesis concept बा aspect गुडी को voluntary association पई growth कराई था help करी थे that is transformation of a traditional philanthropy
and charities in a democratic society, transition from feudalism to commercial economy, expansion of voluntary association, social political voluntarism, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଆସୋସିଏସନ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କନସୋଲିଡେସନ ଅଫ ଭଲଣ୍ଟିୟର ଆସୋସିଏସନ ଇନ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସୋସାଇଟି। କନସୋଲିଡେସନ ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସୋସାଇଟି। So welfare state and a voluntary association. The first one, welfare state con. The voluntary sector remained a major provider of care of children and handicapped. So welfare state हम कहा कहबा जनमंगल राष्ट्र अनेक समय डिस्कशन करिछि at the time of my previous classes मु पूर्व क्लास मानकरे गोटे वेलफेयर बा जनमंगल राष्ट्र उपरे सम्यक धारणा मु आगुर प्रदान करिथिली। सो वेलफेयर स्टेट अगेन सबल मन रखिथिबो पार्ट IV of the Indian Constitution directive principle of state policy included that India is a welfare country। चतुर्थ स्तंभ संविधान पार्ट IV रे कहउछि भारतर राष्ट्र निर्देशावली रे जे इंडिया इज ए वेलफेयर कंट्री। केतेबेले वेलफेयर हबो आम देश केतेबेले वेलफेयर हबो जेतेबेले समस्त आर्थिक सामाजिक एवं देश रे बेकारी दारिद्र्य अनाहार एगुड़िक न रहिबो। सो राष्ट्र निर्देशावली नियम कहउछि 14 वर्ष पर्यंत मागणा रे शिक्षा पिला माने पाइबा उचित। सो दैट इज वन वेलफेयर इंडिकेटर्स। सो अगेन देश रे दारिद्र्य रहिबोनी धनी दरिद्र मध्य रे थिबा गैप सेटा मध्य दूरीभूत होबा दरकार। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर सेक्शंस वी मस्ट इग्नोर। सो गवर्नमेंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस and plan take strategy how to reduce the gap between rich and poor section and to increase the per capita income of the individual and that is children and handicap we take the care for the children and handicap and ignore the bonded labor system. So then country can turn into welfare states or become welfare country. Janamangala rashtra parinata habo. So the new national insurance scheme was implemented partly by voluntary association, etc. So, however, from the early 1960s onwards, most important significant change took place in the nature and character of voluntary association. Also change is the reorientation of some voluntary organization to differentiate their services from those provided by statutory agencies of the welfare state. समस्त गोटे वेलफेयर स्टेट रे सरकारी कल को कहा जाए स्टैट्यूटरी एजेंसी। स्टैट्यूटरी एजेंसी सरकारी कल मान कहा जाए ब्यूरोक्रेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आम देश रे जहा अछि पार्लियामेंट अछि स्टेट रे असेंबली अछि जिला स्तर रे जिलापाल ऑफिस अछि ब्लॉक ऑफिस अछि तहसील अछि उपजिलापाल अछि ऑल दिस स्टैट्यूटरी एजेंसी सब सरकार टू प्रोवाइड मैक्सिमम वेलफेयर टू द सिटीजन्स थ्रू द स्टैट्यूटरी एजेंसी ऑफ द वेलफेयर स्टेट so that the emergency of a mutual help voluntary association. So that is one significant change as radical change as held today. Increase in voluntary association devoted to coordination of a diverse range of voluntary activities taking place at local and national level. आंचलिक भित्तिरे जातीय भित्तिरे बा जातीय स्तर रे विभिन्न प्रकार वॉलंटरी एसोसिएशन नै करी देशरु विभिन्न प्रकार डिस्पैरिटी दूर करबा होची वॉलंटरी एसोसिएशन मुख्य दायित्व। टू क्रिएट वन फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द कंट्री गोटे भलो उत्तम परिवेश गठन करबा होची वॉलंटरी एसोसिएशन रो डेमोक्रेटिक सोसाइटी रे अनिवार्य। सो नेक्स्ट जिबा में याधर तमरा आइटम गुड को इंक्लूड करा जाउची एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कौन सो तार वैशिष्ट्य अछि डेमोक्रेटिक सोसाइटी रे वॉलंटरी एसोसिएशन रो कौन सो वैशिष्ट्य अछि
like a voluntary association is a non-statutory body. এটা ଗୋଟେ non statutory but ଯେତକ ସରକାରୀ କଳ ରହିଲା ଏଜେନ୍ସି ରହିଲା that is belongs to the statutory body. So voluntary association is one of the non-statutory body. ଏହା ପାଇଁ ସରକାର ଆଇନ ଇତ୍ୟାଦି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଇନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ଆଇନ ଫର୍ମୁଲେସନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି. So voluntary association non-statutory body, in other words, it does not owe its existence of an act of parliament. कौन act आप parliamentary nine, so that is why it is titled as the non-statutory body. Rather, it originates in the decision of a group of people to join together for achieving some objective. किछि लोक जेतेबेले अन्य थियोरी गुडाक पूर्वरु हम पढिले इंडिविजुअल विल transform or convert into general will or social will, or a group of a person when form the association for to achieve a particular objective or target, so that we can express in democratic form of it is known as the voluntary association. So it is one of the non-profit organization and its purpose does not include profit making for its members. जो माने एसोसिएशन थांती से मेंबर माने सदस्य माने लाभखोर मनोवृत्ति रे निवृत्त न थांती. सो प्रॉफिट मोटिव रे वॉलंटियर एसोसिएशन गठन होई न थाए. सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट गेटिंग एनी सैलरी बट लार्ज वंस एम्प्लॉयड अनेक क्षेत्र रे पेड एम्प्लॉयर मध्ये अछंती. So voluntary association finance of their activities through voluntary contribution. They also raise their own resources through various fund raising activities. Most of them receive grants in aid from the state, from foreign countries, etc. सरकार मध्ये अनेक समय ग्रांट दे थांती, विदेश रु अंतर्राष्ट्रीय स्तर रु ग्रांट मध्ये आसी थाए इत्यादि. किंतु वॉलंटियर एसोसिएशन न लक्षण होची not pay to anybody else, or the members of the voluntary association. State voluntary organization and development. Next unit रे हमें जिबा the state voluntary organization and development. गोटे स्टेट एवं voluntary organization संगठन voluntary संगठन एवं तार विकास किभली हेई पारुछि गोटा देश रे. सो ओरिजिन ऑफ स्टेट हमें सब जानि जंदी एठी हमर सब्जेक्ट मैटर होछि द स्टेट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट हला. सो स्टेट किभली हम आगुर विभिन्न प्रकार थ्योरी हमें पढि कि आछंती. द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड नोशन ऑफ स्टेट इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ सिटी स्टेट्स इन एंशिएंट ग्रीस. ग्रीस रु सब सभ्यता हम गतकाली कहउथिली पृथ्वी रो मुख्य सभ्यता गुडी को स्टार्ट है ग्रीस रो. सो एंशिएंट सिटी स्टेट्स एज एग्जिस्ट इन ग्रीस हैविंग ए डेफिनाइट टेरिटरी. गोटे स्टेट को हमें किभली स्ट्रक्चर दे परिबा. गोटे स्टेट रे गोटे निर्दिष्ट टेरिटरी थिबा दरकार, स्पेसिफिक पॉपुलेशन थिबा दरकार, किछि जनसंख्या थिबा दरकार, एंड आइडिया ऑफ सिटीजनशिप एंड कंसेप्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ. एवं से स्टेट रे राज्य रे कोन थिबा दरकार, किछि आईन कानून व्यवस्था थिबा दरकार. ताले गोटे स्टेट को किमित कोन करबा, गोटा स्ट्रक्चर ता गठन शैली कोन. गोटा स्टेट ना निर्दिष्ट गोटा अंचल थिबो, ज्योग्राफिकल सराउंडिंग. दुई रे किछि जनसंख्या थिबे. तीन रे रूल ऑफ लॉ थिबो, किछि नियम कानून थिबा दरकार. सो दैट वी कैन टाइटल द स्टेट as what the ancient state in Greece existed by taking all these elements. The origin of a state can be traced as far as back of the rise of civilization. सभ्यता द्रुत गति रे आगे जिबार पर स्टेट रो माने मॉडिफिकेशन अनेक परिमाण रे कि वर्तमान पृथ्वी सारा पृथ्वी रे विभिन्न स्टेट बा कंट्री सब गठन करा जायछि. For long people lived a nomadic life as hunters or food gatherers.
फॉर सर्वाइवल बंचिबा पाई माने हंटर भाबरे थिला बा शिकारी भाबरे बड़ जंगल सभ्यतार बसबास करूथिला subsequently control over land become an issue of serious concern and the process of exercising control resulted in many forms of ownership and property rights over various areas of land. Any disagreements over claims of ownership normally degenerated into violence and conflict. तापर धीरे धीरे परस्पर मध्यरे रिवोल्यूशन स्टार्ट होला परस्पर भायोलेंस स्टार्ट होला कन्फ्लिक्ट सृष्टि होला एंड किभଳି जने हाउ टू कलेक्ट मैक्सिमम वेल्थ हाउ टू बिकम रिच एंड रिचर एई भଳି सब विभिन्न प्रकार कन्फ्लिक्ट रिवोल्यूशन भायोलेंस पृथ्वी रे आरंभ होइथला gradually organized powerful groups established ownership over land wherein a large number of other people simply worked for a living किछि लोक खाली बंचिबा पई चेष्टा करले किछि लोक अन्य मान को डोमिनेट करी रखिले सो एई भଳି एक्शन रिएक्शन रिवोल्यूशन पृथ्वी रे आरंभ होई कि तापरे स्टेट सब बा कंट्री सब स्टार्ट होला एंशिएंट पीरियड रे कोन ताको कहउतला एंशिएंट पीरियड रे सिटी स्टेट बोली of ancient Greece are considered as the first established state where powers were distinctly defined in terms of law. Ancient Roman Republic inherited the political tradition of the Greece and the concept of rule of law was further developed. Ancient Greece रे जो rule of law थिला ता से rule of law माध्यम रे बहुत डेवलप करा जेतिला स्टेट गुडी को So, the basic similarity between Greece policy and a modern state, a definite territory. So, what a modern state re kon thiba darkar, a definite territory, निर्दिष्ट अंचल geographical surrounding थिबा दरकार. दुई रे a specific population, निर्दिष्ट population जनसंख्या थिबा दरकार. से जो वर्ण जाति धर्म संप्रदाय रे होंतु. The idea of citizenship, नागरिक संबंध रे धारणा थिबा दरकार. Conception of rule of the law. So, rule of law उपरे मध्य धारणा थिबा दरकार. चारि गोटी एस्पेक्ट हेले आमे गोटे स्टेट बोली कहि परिबा. So modern next होची emergency of modern state कि भली हला. That also you will learn from this block. So foundation of modern next होची फाउंडेशन ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट को आमे किभली कहिबा को हिसाब रे आधुनिक राष्ट्र को आमे इंडिकेट करि परबा मॉडर्न स्टेट as we can as clarify about the modern state a significant feature of state is that it holds jurisdiction over a geographical identifiable territory आधुनिक राष्ट्र रे हमें कोन देखुचंती गोटा निर्दिष्ट जियोग्राफिकल टेरिटरी अछि ए परमानेंट पॉपुलेशन रिसाइड्स विद इन द टेरिटरी परमानेंटली चिरस्थायी भाव रे गोटा निर्दिष्ट जनसंख्या से राज्य रे थांती मोस्टली क्लास्ड एज सिटीजन्स से मानको हमें नागरिक बोली कहि थाउ द सिटीजन्स आर ग्रांटेड ए वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक राइट्स एंड इम्यूनिटीज बाय द स्टेट विद इन द टेरिटरी प्रत्येक citizens are having right to freedom and fundamental rights and fundamental duties also प्रत्येक नागरिकंगर निजर मौलिक अधिकार अछि गोटे राज्य भितरे एवं देश पई बा राज्य पई हमर दायित्व मध्य अछि ड्यूटी मध्य अछि a state expresses claim of the hegemony of or predominance within the given territory. It means that state prevails over all kinds of other cities, associations, organizations, group, individuals, and so on living or functioning under its jurisdiction. ये सब जने सिटीजन नागरिक ये सब भीतर इन्वॉल्व होई परिबो ऑर्गेनाइजेशन गठन कर परिबो एवं एसोसिएशन गठन कर परिबो ग्रुप गठन कर परिबो एवं बंचिबा पाई जेते सुख स्वाच्छंद से पाई परिबो So, the harmony of supremacy state is based on the rules which in turn have universal basis
and recognition within the specified territory जहा आईनी रूल ऑफ लॉ प्रणयन करा जिवो गोटे स्टेट रे ता यूनिवर्सली इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन समग्र समस्तक पई समान आधार रे जो आईनी कानून प्रणयन करा जिवो समस्तक पई समान थिबा दरकार so within the territory maximum control resources is controlled and forced overall by the countries maximum संबल गुड़िक राज्य द्वारा बा देश द्वारा नियंत्रण करा जाई थाए दैट स्टेट इज सॉवरेन आमे जानिछु स्टेट गोटे होतबा दरकार सार्वभौमत्व प्रत्येक स्टेट रो मुख्य होची सार्वभौमत्व जो देश रे बा जो स्टेट रे सार्वभौमत्व न थाए सब बेले घन घन विदेशी राष्ट्र ताको अटैक करू थाए हला सार्वभौमत्व internally we are free externally no foreign aggression will be held for the country sovereign ame kiboli sovereign ba sarvabhaumotva boli ame kiboli bujiba that means internally we are free to move within our geographical boundary so taku kha jay internal sovereignty ba अंतर्देशीय देश भीतर सार्वभौमत्व आमे के कहबो कि मु ओडिसा लोक मु जीबी मध्य प्रदेश को मु जीबी पंजाब को के ऑब्जेक्शन करिवे कि नो सो इंटरनली वी आर फ्री टू मूव सो एक्सटर्नली नो फॉरेन अटैक विल बी हेल्ड फॉर द कंट्री जे हमको अटैक करिवो हमर सार्वभौमत्व को क्षुण्ण करिवो आमे मध्य तार प्रति जवाब देबो तणु ता कहा जाय एक्सटर्नली वी आर आल्सो फ्री no foreign country will attack to us so sovereign होची मन रखते दुई प्रकार internal sovereignty external sovereignty that you can write in your answer script during the time of examination so that is the short question asila so it means the state has supreme authority claims sole within the its territory simply stated that it is predominant and has no rival or contesting forces within the territory टेरिटोरी भितरे किछि राइवालिटी बा प्रतिद्वंदी नथिबे सब भारतीय आम देश जे भली ऑल भारतीय होचंती सब भारतीय होचंती नागरिक होची भारतर नागरिकत्व पाई प्राप्त होइछंती द स्टेट्स इज सॉवरेन सिंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट एज ए सेपरेट ऑटोनोमस एंटिटी द नोशन ऑफ लॉ originates within the existence of state it is the source of law the state is the only source of compulsory rules no other entity groups or individual within its jurisdiction can exercise the element of compulsion or compulsory rules in any manner अन्य कोनोसी व्यक्ति देशर जातीय आईन उपर हस्तक्षेप इंटरफेयर करि परिबो नाही बा अन्य केही प्रणयन करि परिबे नाही देशर सार्वभौमत्व अखंडता रक्षा करबा पई देशर गोटी आईन समग्र सबु राज्य पई प्रचलन करा जिवो सो फिलोसॉफिकल असम्पशन ऑफ मॉडर्न स्टेट दार्शनिकवाद आधुनिक स्टेट रो दार्शनिक तत्व कोन natural authority natural rights and social contract एई भली होची फिलोसॉफिकल दार्शनिक तत्व मध्य हिसाब रे जे मॉडर्न स्टेट आधुनिक स्टेट टी सुपर नेचुरल और नेचुरल अथॉरिटी थिबा दरकार किए दैट वी कैन इंडिकेट टू गॉड जहा नियंत्रण होची गोटे देशर आईन गॉड और डिवाइन राइट ऑफ द किंग दैट सुपरनैचुरल पावर सबु किछि की सुपरनैचुरल अथॉरिटी इज देयर we can title him as the god or a divine right of the king so natural rights this theoretical assumption considers that individuals have certain basic natural rights and the state emerges and are not established for the protection of those natural rights सुरक्षा देबे राष्ट्र सुरक्षा देबो नेचुरल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स जे भली हमर अछि राष्ट्र ताको सुरक्षा देबो बेले बेले राष्ट्र कोन करि थाए विथड्र कर थाए ते फंडामेंटल राइट्स को
सरकार बेले बेले इमरजेंसी समय रे हमर जो राइट्स गुडी अछि फंडामेंटल राइट्स को केते बेले केतेटा फंडामेंटल राइट्स को विथड्रॉ करनी जेतांती इमरजेंसी समय रे ड्यूरिंग वार ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज एई सब विपज्जनक अवस्था रे सरकार केते गोटे फ्री टू मूव ए सब एसोसिएशन फॉर्म करबा सरकार बेले बेले तको विथड्रॉ करने जेतांती हमें ए सब कर्म केतरा कर्म को निवृत्त रहबा पई पड़ी थाए काहे कि एटा करथाय ना राष्ट्र रो मंगल पई वार समय रे हमें किभली फ्री मूवमेंट करबा देशर धन प्राण हानि घटी पारे जदि हमें फ्रीली मूवमेंट करबा जदि गोटे दुईटा देश मध्य रे वार चली तो सरकार से समय रे राइट टू मूव विथड्रॉ करने जेतांती राइट टू फॉर्म एसोसिएशन मध्य विथड्रॉ करने जेतांती केते गुडी ब्रेक डाउन करा जायता तापर सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट कॉन्फ्लिक्ट मध्य थाए गोटे राष्ट्र रे सम इंपोर्टेंट थियोरीज ऑफ स्टेट केते गुडी तत्व अछि स्टेट रो द एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ स्टेट हला एब्सोल्यूट थ्योरी कोन द मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ स्टेट इज टाइड अप विथ द फाइव इंपोर्टेंट कांसेप्ट एब्सोल्यूट लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डिवाइन राइट ऑफ द किंग हला रीजन ऑफ स्टेट एंड नोशन ऑफ पर्सनल स्टेट ये गुडी होची एब्सोल्यूट एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट द concept of sovereignty was the central plank of absolute theory हम तो sovereignty ऊपर अनेक कथा आलोचना करि चलेनी बा ओडिया ताको जे सार्वभौमत्व जा हम प्रियम्बल ले ओडा इंपोर्टेंट एस्पेक्ट भाबरे इनकॉर्पोरेट करा जाइछि so sovereignty was the source of law above all law and had complete supremacy within the country sovereignty होछि supremacy of the law. So the constitutional next was the constitutional theory of state. Constitutional theory of state कौन? However, with the rise of a population, popular democratic ideals, concomitant with emergency of capitalism, growth of more and more independent administration, and later the notion of national sovereignty, the requirement arose for a different understanding of the state. Constitutional theory of the state. Constitution by संवैधानिक तत्व गोटा राष्ट्र पाई. The most prominent conception of constitutional emerged in America and France during the 18th century. So that in America, in France, different rule of law are included or incorporated in their constitution to change the state towards the modern state. So बहुत समय रे अमेरिका फ्रांस एवं इंग्लैंड रे सेमानकर रूल ऑफ को चेंज करी करी आधुनिक राष्ट्र रे परिणत करा जाई पारिछि. It was an idea of a written document incorporating fundamental rights and freedom. एगडा सब गोटा written document एगडा सब परिवर्तन करा जाय मौखिक भाବରେ नो वर्बली नो पर written हिसाब रे कारण एबे परिवर्तन हेले परवर्ती जनरेशन ताकू मध्य अनुभव करि परिबे जोडा चेंज होची विदाउट हॉल्डिंग इन एनी वे अबाउट द मिस्ट्रिज्म एंड द एंशिएंट स्टेट इट वाज rational constitutionalism which furnished a direct logic and defense of rights and freedoms in the modern era in modern age so that it required to change and incorporate different written concept for the modern era or modern age. आधुनिक राष्ट्र को खाप खुआई चलिला भलिया आधुनिक विश्व सहित हमकु परिवर्तन अनेक समय करा जाउ करूछंती संविधान को. So development concern of the welfare state कि भली विकास हेई परिबो. In order to understand the welfare development, it is of paramount importance for you to understand the various dimensions of welfare state. Emergence of welfare state is very inevitable. Theories of welfare state and their implication for the process of developing. The notion of welfare state first emerged in Great Britain during the Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध पर प्रथमे राष्ट्र माने जनमंगल राष्ट्र ब्रिटेन नु स्टार्ट होइतला कारण ध्वस्त विध्वस्त होई परितला
द्वितीय विश्व युद्ध पर सारा विश्व विभिन्न कंट्री गुड़िक विध्वस्त होता जन धन सबू विध्वस्त होता तेणु गोटे देश किभली जनमंगल राष्ट्र बा वेलफेयर स्टेट रे परिणत हो पार सरकार से चिंता कले ब्रिटेन प्रथम स्टार्ट होता द टर्म केम इनटू मोर जनरल यूज फॉर द रेफरिंग टू चेंज द various concept and a social and economic policy aimed at transforming British society social सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक aspect गुड़िक सब परिवर्तन करागला the important policy measures adopted by states related to point 1 रे maintenance of full employment ताले जनमंगल राष्ट्र रे full employment ता माने बेकारी नथिबा दरकार so those people have been living below the poverty line we should eradicate the poverty situation from the country that we can title as the welfare state the bonded labor गोती श्रमिक ए गुड़िक सब देश भितर नथिबा दरकार social security national health services education housing employment services welfare services for elderly handicapped deprived children एमनक पाई विभिन्न प्रकार राष्ट्रर सुविधा बा मंगल उद्देश्य रे सरकार जो देश रे आईन प्रणयन करितिबे so that we can title that state is one of the belongs to welfare state जो राष्ट्र रे जातीय संपद उपरे देशर उन्नति विकास करेबा बा देश को अर्थनैतिक दृष्टिकोण रु आगे नबा सामाजिक सिक्योरिटी थिबा दरकार देशर शिक्षा व्यवस्था उत्तम शिक्षा व्यवस्था गुणात्मक शिक्षा प्रचलन थिबा दरकार गृह गरीब लोक मान को गृह जोग होइथिबा दरकार देश रे बेकारी नथिबा दरकार एवं वेलफेयर सर्विस विभिन्न जन मंगलकारी कार्यक्रम सरकार हाथ को नेले ताकू हमें वेलफेयर स्टेट भाव में परिणत करि परिबा सो थियोरीज ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड इम्प्लिकेशन ऑफ डेवलपमेंट कौन सब तत्वभित्तिक अच्छी इम्प्लिकेशन ऑफ डेवलपमेंट डिमांड थ्योरी गोटा हूँ इंडस्ट्रियल थ्योरी अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरी कौन इंडस्ट्री तुम जान इंडस्ट्री हूँ बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्टर आमर तीनोटी सेक्टर अच्छी गोटे अर्थनीति व्यवस्था दैट इज प्राइमरी सेक्टर द्वितीय हूँ सेकेंडरी सेक्टर थर्ड हूँ सर्विस सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र ओडिया कहले आम बुझा प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र बा सेवा क्षेत्र बोली तो कहबा सो इंडस्ट्रियलाइजेशन डिमांड और इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरी बिलोंग्स टू द एनालिसिस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर आगो काहे की सेकेंडरी सेक्टर कहउचंती ना वी फुलफिल आवर सेकेंडरी वांट्स प्राइमरी वांट्स हम जानचंती खाद्य वस्त्र बासगृह फूड क्लॉथिंग शेल्टर सो सेकेंडरी वांट्स कोन ना ये खाद्य वस्त्र अति आवश्यक द्रव्य परिपूर्ण हो गला परे वी रिक्वायर्ड कंफर्ट्स एंड लग्जरियस लाइफ आमे आराम विलास रे बसवास करबा पई बंचिबा पई हमको सेकेंडरी सेक्टर इज इनएविटेबल दैट इज कंफर्ट्स एंड लग्जरियस लाइफ आमे घरे फैन लगाइबा एयर कंडीशन लगाइबा रेफ्रिजरेटर कलर टेलीविजन लगाइबा एगुडे सब होची फोर व्हीलर एयर कंडीशन कार मॉडर्न फैशन व्हीकल व्यवहार करबा होची इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन प्रोडक्ट गुड़िक सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट गुड़िक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट आर क्लोजली लिंक्ड टू द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन and its contribution to economic development. It is argued that technological imperatives of industry determine the nature of economic and social institutions industrialized societies. Under the influence of industrialization, societies tend to converge or become more and more similar. So implication relating to the expenditure incurred on social welfare and development of the society required the process of industrialization generates social, economic and geographical dislocation. So here consequently there occurs urbanization, geographic mobility, migration of people and
smaller nuclear family, diverse and various social problems, and production of different goods, commodities of luxurious and comforts items. So ये होची इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्योरी रो एलिमेंट गुडी को गोटे देश रे इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन हेले कोन हबो ना देयर विल बी ट्रांसपोर्टेशन दैट्स the indicators of the modern industrialization like expansion of road transport communication and a modernization of technology and excess industrialization will be held possible. We can eradicate unemployment, we can eradicate the poverty situation from the country, and we can utilize the all the natural resources like mineral resources, forest resources, water resources, human resources. We can utilize expansion of education, urbanization ultimately will be held possible. गोटे देश रे एते प्रकार सुविधा हे परिबो अधिका माने अर्बानाइजेशन शहरीकरण हे परिबो माइग्रेशन ऑफ द पीपल विल बी हेल्ड पॉसिबल सो एई बली सब इंडस्ट्रियल थ्योरी रे वेलफेयर स्टेट रे हमें जदी वेलफेयर को आगे नबा ताले देश रे इंडस्ट्रियलाइजेशन संभव हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो नेक्स्ट होची neo Marxist theory of advanced monopoly capitalism that is also included here in this subject. Next other include kara jauchi working class social democracy. This theory social democracy kon this theory considers that working class political power rather than capitalistic dominance. Working class upar guru diya jauchi working class social democracy re we can give in priority on the working class, labor class people. The government should not give in priority or importance on the that capitalistic people or economy. Next is interest group politics theory. Interest group. The welfare state also includes the interest group politics like demographic and economic change influence the structure group resources and development of welfare spending. So welfare spending upare sarkar adhika gurutva deithandi. Kon welfare spending? Prepare plan and budget and sanction for the upliftment of the rural people and those people living below the poverty line and facilitates maximum welfare for the farmers because India is a country of farmers or village. India is a country of villages. Joutare maximum people are more than 80% living in the rural area. Mahatma Gandhi jota kahithile if the village will grow and develop the country will grow and develop. गाँव रो लोक मानकर पर कैपिटा इनकम बढ़िले समग्र देशर जातीय आय वृद्धि पाइबो जोथि पई महात्मा गांधी गिवन प्रायोरिटी ऑन दी विलेज इंडस्ट्री और ऑन स्मॉल एंटरप्रेन्योर क्षुद्र उद्योग जदि स्कैटर्ड हिसाब रे चारियाडे बिछाड़ी हे कटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स एवं सेरिकल्चर एक्वाकल्चर जदि गाँ गंडा रे विचलित भाव रे स्कैटर्ड हे कि छोट छोट उद्योग सृष्टि हेबे ताले दी कंट्री विल डेवलप बिकम ए वेलफेयर स्टेट so this is the viewpoint of the welfare state or country welfare state रे मध्य बहुत प्रकार क्राइसिस अछि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर एउठ हमर स्टार्ट हबो डेमोक्रेसी केवल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट करि परिबा द क्राइसिस अच्छा काली जो पिलाटी हेलो क्वेश्चन करथल ता ना कोन से पिलाटी काई आज आसी नै काली जो पिलाटी क्वेश्चन करथला से पिलाटी काई आसी नै चत्रिता साहू हेलो सर Yes, sir. ता ना पिलाटी ना कोन अभिमनु सर हितेशु दास हां हितेशु दास राइट यू आर करेक्ट से पिलाटी काई आसी नै हां सर से 14 नंबर पेज रे जोंडा थिला सेही क्वेश्चन ता से करैथिले ना ना से कहथला जे से काई आसी नै हमें तक आज डिस्कशन करि थांबे हां सर तथापि तुमको आज डिस्कशन कर दउची ता ऊपर टिके आज्ञा सर Okay, sir. हला Again. करि देबा ता ऊपर डिस्कशन Again. अच्छा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर हमें आसंता काली एटा को पढेबा हला अच्छा इतेशी दास से पिलाटी कहीं आसिला नहीं हमें तब डिस्कशन करथांते आ क्लियर क्लैरिफाई करथांते सो निश्चय विल टू पावर से विषय तो
Hello, Yes, sir. Abhiman. Yes, sir. Again, Okay. sir. So listen to me. आज voluntarism किभଳି सृष्टि होउची आमे गतकाली आलोचना करथिले will individual will when transformed or converted to general will आगे फंडामेंटल जिंस तक बुझिबा when individual will is converted into general will or common will or social will व्यक्ति को स्वार्थ जेतबेले समाज केंद्रिक होई जीवो अनेक व्यक्ति समाज प्रति जेतबेले तांकर will बा इच्छा शक्ति को कोन करिवे सैक्रिफाइस करिवे सेते बेले आमे तक कहिबा कोन वॉलंटरिज्म आमे वॉलंटरी हिसाब रे स्वेच्छाकृत भाव रे हमर श्रम समय को दान करि परिबा एटा आमे जानिले नै कि ए कथा किए कहिथिले हमको ए कथा हमको किए कहिथिले स्कोपेनहॉर्स मन रखु ना स्कोपेनहॉर्स वन ग्रेट फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट कहिथिले इंडिविजुअल विल व्हेन ट्रांसफॉर्म इनटू जनरल विल और सोशल विल स्कोपेनहॉर एक कथा कहिथिले देन वी कैन टाइटल एट द वॉलंटरिज्म बट हियर निश्चय इज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर हला निश्चय होचन जने बड़ फिलोसोफर दार्शनिक विद जने से कोन कहले नेगेशन ऑफ वॉलंटरिज्म नेगेशन माने नेगेटिव बुझि पाइला नेगेटिव माने खराब विधि विधान को बुझाए सो निश्चय कथा कहले तो फास्टली निश्चय वर द फॉलोअर्स ऑफ स्कोपेनहार्क रो शिष्य थिले फॉलोअर थिले से के निश्चय कथा तो कहले निश्चय विल टू पावर दैट इज नेगेशन ऑफ वॉलंटरिज्म हमर वॉलंटरिज्म बा स्वेच्छासेवी बोली कहा को कहबा जेतला हमें निजे निजर स्व इच्छा रे समय श्रम को दान करि परिबा समाज उन्नति उपलक्षे किंतु निश्चय कहउचंती जे that sustenance survival and development of one's own life मनीष खाद्य संग्रह करिबा बंचिबा एवं सर्वाइव करिबा गोटा समस्तंकर नीतिदिनिया काम बुझि परल दैट इज वन विल सेटा को विल टू लिव बोली कहउतले के स्कोपेनहॉर्स कहले दैट इज विल टू लिव जस्ट आमे किभली बंचिबा बुझिला बट निश्चय ताकू नेगेशन ने परिणत करले ताकू नेगेशन बोली कहले काहाकू ना स्कोपेनहार्क को कहले द ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट जस्ट ड्राइवन बाय द सिंपल नीड ऑफ सर्वाइवल मनुष्य केवल बंचिबा पाई से ता एसोसिएशन गठन करूनी बा संघर्ष करू नाही से चाहूची हाउ he will become survive and dominate to other people in the society समाज रे अन्य ऊपर किभली अग्राधिकार जाहिर करिबा हला सो निश्चय will is one version will as will to power निश्चय कहले will to power समस्ते पृथ्वी रे सब व्यक्ति सब देश राष्ट्र पावर ऊपर गिवन इंपोर्टेंस जेते शक्ति देख पृथ्वी रे जेते रिवोल्यूशन एंशिएंट टाइम रे रिनाइसेंस रे जेते प्रकार रिवोल्यूशन होईची समस्ते हैंकरिंग टू पावर हाउ टू डोमिनेट टू अदर कंट्रीज हाउ टू कलेक्ट मोर एंड मोर वेल्थ एंड टू बिकम रिच एंड रिचर इन द सोसाइटी अन्य को हेलो चंदन टिके अपेक्षा करिथिबो हेलो चंदन हेलो चंदन ठीक है सो मम वॉइस इज क्लियर और नॉट अभिमन्यु हेलो क्लियर सर अच्छा क्लियर सर बुझी पारुछ तो नेगेशन ऑफ वॉलंटरिज्म आज्ञा सर ठीक है आईडिया आसला तो आईडिया सो पृथ्वी रे कोन होउची ना निश्चय कहले द ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट जस्ट ड्राइवन बाय द सिंपल नीड ऑफ सर्वाइवल मनुष्य केवल बंचिबा पई से सर्वाइव करिबा पई से विल करू नाही
will to power. How to capture power? Each individual in the society always try to earn more and more wealth, how to become rich and richer in the society. सबु लोक पृथ्वी रे कौन करि थांती सबु लोक चाहि थांती मु किभଳି सर्वश्रेष्ठ धनी व्यक्ति हेबी अंबानी भଳି बा मित्तल भଳି विराट धनी व्यक्ति हेबी बा बिल गेट्स भଳି विराट कोटिपति हेबी पृथ्वी रे तेणु सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से निश्चय कहते सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स विल टू पावर हाउ टू कैप्चर पावर सो डोमिनेट दा माने जदि पावर कैप्चर करिवि वित्तशाली हेबी ताले मते कोन करिया पे पड़िबो टू अटैक अदर्स टू बिकम रिच एंड रिचर इन द सोसाइटी सो देयर विल बी दे इंटेंड टू वीकर इन दिस प्रोसेस they also intend to make others weaker and them to their own will. Therefore, Nietzsche considers version of will to power as a primary, while regarding Schopenhauer's will to live as a secondary. So, primary aim होची प्रत्येक व्यक्तिंकर जे will to power केवल कौन अभिमन्यु हेलो केवल कौन समाज रे जने व्यक्ति चाहूची कि खाली बंचिबा पाई से चाहूची कि हाउ capture power, will to power. So will to power as per the Nietzsche's view is the primary one. सबु लोकंकर धनी होवा पाई अन्य ऊपर अग्राधिकार जाहिर करिया पाई समस्तंकर इच्छा शक्ति अछि yes or no Yes, sir. Yes, sir. बस so that is the negation of the voluntarism जदि एइटा हबो ताल voluntarism सहजरे गठन होई परिबो नाही स्वेच्छासेवी संगठन हेई परिबो नाही से अन्यथर कहले निश्चयस concept of will of to power contains the spirit and immense potential of voluntarism. The concept at the same time as with a fierce and aggressive drive for the expression of voluntarism. So aggressive drive अन्य को आक्रोश करिबा ताले किभली सोशल एसोसिएशन वॉलंटरी एसोसिएशन गठन हे परिबो अन्य को जदि हम अटैक करिबा एग्रेशन देखिबा it is impossible because of this fact an individual voluntaristic expression or action may come into direct confrontation with others such excessive voluntaristic expression intend to make others weak जेतबे excessive हमें एई भली अन्य ऊपर अटैक करिबा अग्राधिकार जाय करिबा एवं एक्शन नबा ताले सेटा कोन होई जिवो this kind of aggressive of voluntarism by any individual negates and neutralize the variations of voluntarism. एटा गोटा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो तेणु आमे voluntarism गठन करि परिबा नाही सो लव प्रेज अन्य को भलो पाइबा सम्मान दबा ताहाले वी कैन फॉर्म वन वॉलंटरी एसोसिएशन जदि अन्य को अटैक करिबा अन्य ऊपर अग्राधिकार जाहिर करिबा and to try collect more and more rich and wealth to become rich and richer like Bill Gates, Dhirubhai Ambani, Mittal एमानक भली आमे जदि रिवोल्यूशन करिबा देश रे कोटिपति धनी होवा पई चेष्टा करिबा so that the association voluntary association automatically become defunct. We cannot form one beautiful voluntary association. एटा डिफंक्ट आइ जिवो पंगु आइ जिवो हमें जो उद्देश्य नै करी वॉलंटरी एसोसिएशन गठन करूचंती एटा आ संभव हो नै आवर ड्रीम विल नॉट फुलफिल आर यू क्लियर अबाउट द नेगेशन ऑफ द वॉलंटरी एसोसिएशन Yes, sir. अच्छा सचिता क्लियर अभिमन्यु क्लियर Again, sir. प्रतिमा Yes, sir. प्रतिमा Yes, sir. किए कथा कहिथिले नेगेशन ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन के कहिथिले फिलोसोफर को फिलोसोफर अभिमन्यु निश्चय फिलोसोफर ना तांगा नाम होची निश्चय बुझेला निश्चय 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 स्पेलिंग होची स्पेलिंग मु डाकी दोती लिख तांकर टाइटल ना होची NIETZ
SCHES प्रोनाउंसिएशन होची निश्चय हैला लिखिलो Yes, sir. Yes, sir. निश्चय ताको प्रोनाउंसिएशन होची निश्चय सो निश्चय will to power negation of voluntarism will to power not will to live भगवान अभिमन्यु बुझे होची अभिमन्यु हाँ सर not will to live not will to live not will to live किए कहिथिले स्कोपेनहर्स हाँ स्कोपेनर स्कोपेनहर्स फिलोसोफर स्कोपेनहर्स बट will to power किए कहिले सर निश्चय निश्चय राइट सो will to power हे गले that become not judicious for the society for the voluntary association अन्य ऊपर आक्रोश करिवा अन्य को अटैक करिकरी धनी हवा that not the best indicator of the for the voluntary association it is impossible बुझी पारलो Yes, sir.